अब वी गोना डिस्कस अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स. सो फर्स्ट जो जेनेटिक डिसऑर्डर हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज ऑटोसोमल साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर. ऑटोसोमल साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स यहाँ पे मेनली ऑटोसोम्स का डिफेक्ट है. ठीक है, ऑटोसोमल. तो इसमें फर्स्ट जो डिसऑर्डर आएगा वो क्या है, दैट इज द डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम क्या है, इट इज अ ट्राइसोमी 21. ओके, यहाँ पे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम क्या है, दैट इज अ नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग meiosis. I have told you, do you remember the mechanism of the mutation where I have discussed about this non-disjunction during meiosis? We have written there the trisomies, okay, or monosomies. So the most common cause is this non-disjunctional during meiosis. Now what are the other cause of this Down syndrome? Other causes क्या हैं? See, the Robertsonian translocation is also a cause of Down syndrome. Robertsonian translocation. Generally, in 4% cases, this can lead to Down syndrome. Second cause is what? Second is the mosaicism. 1% cases में mosaicism can lead to Down syndrome. Now, here in Down syndrome, you wanna see what? Mental retardation. We have discussed in case of Fragile X syndrome. Fragile X syndrome is the second most common cause of mental retardation, whereas the most common cause कौन सा मेंटल रिटार्डेशन का, दैट इज द डाउन सिंड्रोम. सो इट इज व्हाट, इट इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ mental retardation. First most common cause of mental retardation is Down syndrome. Okay, now see, जनरली जितने भी पेशेंट हैं ना डाउन सिंड्रोम के, उनको आफ्टर द एज ऑफ 40 दे आर हैविंग वन डिजीज दैट इज अ एल्जाइमर डिजीज. सो आफ्टर एज ऑफ 40 or more than 40, the patients of Down syndrome can develop what disease? Alzheimer's disease. Okay, most common leukemia in case of Down syndrome is what? That is ALL. ओके, अगर वो पूछे लेस देन 3 years के पेशेंट हैं और उसमें डाउन सिंड्रोम है, तो व्हाट ल्यूकीमिया इज मोर कॉमन? तो योर आंसर इज AML, मेनली M7 टाइप. ओके, एंड if they ask you what is the most common cardiac defect in case of Down syndrome, then what is your answer? Most common cardiac or cut. Repeat. So most common cardiac defect in Down syndrome क्या है? That is our endocardial cushion defect. Endocardial cushion defects. आफ्टर एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट्स कौन सा डिफेक्ट है?
VSD is there, and after VSD, what is there? That is the ASD. So ये important points हैं जो आपने याद रखने हैं. Now if they ask you overall most common trisomy in a living individual is what? Then the answer is Down syndrome or trisomy 21. So अगर वो आपसे पूछे मोस्ट कॉमन ट्राइजोमी ओवरऑल क्या है, दैट इज 16. लिविंग में ओवरऑल मोस्ट कॉमन है 21, बट ओनली ओवरऑल अगर है क्वेश्चन में तो योर आंसर इज ट्राइजोमी 16. नाउ फर्स्ट क्लिनिकल फीचर इज द मेंटल रिटार्डेशन. सेकेंड क्लिनिकल फीचर इज द मोंगोलॉइड आइज. इनकी जो आइज होती हैं दे आर मोंगोलॉइड, मीन्स दीज काइंड ऑफ आइज आर देयर. थोड़ा ऐसे होंगी, ऊपर को उठी हुई. ओके. थर्ड क्लिनिकल फीचर इज देयर इज अ एपिकेंथल फोल्ड. एपिकेंथल folds are there. For example, this is the nose, okay, and these are the eyes of the patient. You're gonna see this folds like this. These are the epicanthal folds. These are the eyes of the patient. This is a epicanthal fold of the skin. This kind of fold you're gonna see in case of the Down syndrome patient. Fourth is the congenital heart diseases. Fifth, here you're gonna see some intestinal defects will be there. Intestinal defects are present. Sixth, simian crease. Simian palmar crease is present. See, this is the hand of the patient. This is the hand. Okay. Here there is a presence of crease like this. This is the simian palmar crease. Now, seventh feature is the finger of these patients are generally short. Short fingers are there. So these are the important clinical features in case of the Down syndrome patient. And one more feature just add, जो 8th feature है, that is what? That is जो toe की fingers है ना, उनके बीच में काफ़ी white gap present होगा. And ऐसे feet को हम क्या नाम देते हैं? Saddle gap feet. Saddle gap feet or toes. Okay. Now this is all about the Down syndrome. तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जिस सिंड्रोम के बारे में हम बात करेंगे दैट इज द एडवर्ड सिंड्रोम. एडवर्ड syndrome, and this Edwards syndrome is the trisomy 18. Trisomy 18. इसको याद कैसे करेंगे? जनरली आप कब एलिजिबल होते हो वोट डालने के लिए? दैट इज अराउंड द 18 years. सो इलेक्शन और 18. सो एडवर्ड इज द ट्राइजोमी 18. एंड डाउन मीन्स ड्रिंक आप कब कर सकते हो? जनरली 21 एज है, तो down is for trisomy 21. Okay. Now, what is the most common cause of Edwards syndrome? Most common cause, same. It is a non-disjunctional during meiosis 2. Non-disjunction of chromosome during meiosis 2. Okay. Now, what are the clinical features of Edwards syndrome? So here you're gonna see this is a baby.
यहाँ पे जर्नली जो ऑक्सीपिटल रीजन है ना इस बेबी का, वो क्या होता है, इट इज़ वेरी इनलार्ज और यू कैन से इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट. हियर द ऑक्सीपुट इज प्रोमिनेंट. एंड यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली एक अपीयरेंस देखने को मिलेगी, दैट इज द क्लेंच्ड फिस्ट इज प्रेजेंट. सो सेकेंड क्लिनिकल फीचर यहाँ पे क्या होगा, क्लेंच्ड हैंड. क्लेंच्ड हैंड इज देयर with overlapping fingers. Can you see this position? The thumb is within these fingers. These fingers are overlapping the thumb. Okay. Third is the rocker bottom foot. The foot is what? Rocker bottom foot is present in this child. इसका क्या मतलब है रॉकर बॉटम फुट का? जर्नली जो बिग टो होगा वो फ्लेक्स्ड होगा. हियर द बिग टो इज फ्लेक्स्ड और जो हील होगी ना वो थोड़ी सी प्रोट्यूडेड होगी. हील इज प्रोट्यूडेड. So these are the main clinical feature that you have to remember. Other feature you can see here, that is what? That is a dysplastic or malformed ear. Dysplastic or malformed ears are present in this child. So this is all about the Edwards syndrome. Now Edwards syndrome is a trisomy of what? 18. These are the main features that you have to remember. The occiput is prominent, clenched fist with overlapping fingers, and the rocker bottom foot. Okay, next we are gonna talk about another trisomy, that is the Patau syndrome. Now what is this Patau syndrome? What is this Patau syndrome? Generally, this Patau syndrome is what? Trisomy 13. Now, how you gonna remember this? 13 में puberty आता है. So 13 and P Patau is P for puberty. Okay. So यहाँ पे अगर they will ask you most common cause क्या है Patau syndrome का, तो your answer is same, that is non-disjunctional during meiosis. Okay. Now, what are the clinical features that you're gonna see in case of Patau syndrome? So, the first is generally इन बच्चों में क्लेफ्ट पैलेट या लिप देखने को मिलेगा आपको. क्लेफ्ट पैलेट या फिर क्लेफ्ट लिप इज प्रेजेंट. दूसरा फीचर क्या है? डिस्प्लास्टिक और मैलफॉर्म्ड ईयर्स. malformed ears. थर्ड जो क्लिनिकल फीचर यहाँ पे है, that is what? Here clenched fist is there, same like Edwards syndrome. Fist, but see यहाँ पे क्या होगा? Polydactyly present होगी. Clenched fist plus polydactyly. Polydactyly मतलब क्या है? Extra fingers are present. Okay. And third जो feature fourth यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, that is what? That is undescendant or abnormal testes are there. Undescendant or abnormal testes are there. So these are the clinical features of the Patau syndrome. Next we're going to discuss about the next syndrome, that is a Cru-Chad syndrome. Next is what? The Cru-Chad syndrome.
Cry-to-chat. Here, it is mainly because of what? Mainly there is a deletion of chromosome 5p. P is what? It is a short arm of chromosome. Okay, deletion of chromosome 5p. Okay, यहाँ पे जर्नली बच्चों में जो क्राइडो-चैट सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं, जर्नली दे हैव अ पर्टिकुलर क्राई और उसको हम क्या बोलते हैं? कैट लाइक क्राई, और यू कैन से मियाऊ क्राई. मियाऊ crying is there. Okay, next syndrome जिसके बारे में we gonna discuss is the DiGeorge syndrome. DiGeorge syndrome. DiGeorge में क्या है? This is also a deletion syndrome. और यहाँ पे किसकी deletion होती है? There deletion of 22 की long arm की deletion होगी. 22q mainly particular locus क्या है? 11.2 is a particular locus. Now what are the feature you gonna see? So for remembering it, I have one mnemonic, that is catch 22. Now here C stands for the cleft lip palate. Cleft lip and palate. A stands for abnormal faces. T stands for thymic hypoplasia. Thymic hypoplasia is there. C is for the cardiac abnormality. Cardiac abnormalities are present. H stands for hypocalcemia. So आपको पता है कि हाइपोग्लाइसीमिया में we have two signs. One is the Trousier sign, other is the Chvostek sign. Chvostek sign क्या है? When you tap on the cheek of the patient, there is a twitching. Facial twitch is present because of calcium deficiency. And Trousier sign क्या है? Whenever you apply the BP cuff over the arm, there is a spasm of the forearm muscles. Okay, so हाइपोग्लाइसीमिया में आपको क्या देखने को मिलता है? ट्राउजियो साइन एंड चिवोस्टिक साइन. एंड 22 क्या है? दैट इज अ डिलीशन ऑफ 22q, mainly 11.2 locus. We're going to discuss about next trisomy, that is trisomy 22. Trisomy 22 को हम एक और नाम भी देते हैं. It is called as cat eye syndrome. It is called as what? Cat eye syndrome. So what is the clinical feature you're going to see in this case? That is vertical colobomas are seen in the eyes. In eye. Now how it is like, if this is the eye, so this vertical colobomas are like this. कैट के आई में ऐसे होते हैं ना. So same you gonna see in eyes of humans. Okay. Now we're gonna discuss about the sex chromosomal diseases. Sex chromosomal diseases, जिसमें first we're gonna discuss about the Klinefelter syndrome. So Klinefelter syndrome mainly males में देखने को मिलता है. So what is the karyotype? That is 47 plus XXY. Extra X chromosome is present in case of Klinefelter syndrome. And most common cause of male hypogonadism is what? That is Klinefelter syndrome. It is the most common cause of male hypogonadism.
hypogonadism. Okay, why? Due to this hypogonadism you will see in these females जो secondary sexual characters होते हैं ना, they all are absent. Secondary sexual characters are absent. Okay, now most common cause of Klinefelter syndrome is what? That is non-disjunctional during meiosis. Okay, now as you know here more one X chromosome is there ना, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, उसकी वजह से क्या होगा? What is gonna see? So more mental retardation will be there. More mental retardation is there. Okay, and more paternal and more maternal age is the risk factor for Klinefelter syndrome. More parental or more maternal age is the risk factor for Klinefelter syndrome. Okay, नाउ यहाँ पे क्या होता है कि आपको जनरली मेल्स में फीमेल्स लाइक करेक्टर देखने को मिलेंगे. एंड व्हाट आर दीज फीमेल लाइक करेक्टर? फर्स्ट इज देयर इज अ लॉस ऑफ बियर्ड्स एंड एक्सिलरी हेयर्स. सो लॉस ऑफ beard and axillary hairs. Now here you gonna see there is a gynecomastia in the males. gynecomastia का क्या मतलब होता है? मेल्स में ब्रेस्ट की ग्रोथ हो जाती है. ठीक है. थर्ड इज जनरली इन मेल्स का टॉल स्टेचर होता है. टॉल स्टेचर इज देयर. फोर्थ यू गोना सी इनके प्यूबिक एरिया में जो हेयर पैटर्न होगा ना, इट इज़ वेरी सिमिलर विद द हेयर पैटर्न इन द फीमेल. सो प्यूबिक हेयर पैटर्न resembles with female. Female hair pattern. फिफ्थ इज यहाँ पे टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है. टेस्टिकुलर एट्रोफी इज देयर. ओके, नाउ सी यू हैव टू remember some important points here. Now they can ask you most common tumor with Klinefelter syndrome. तो क्या होगा? That is breast tumor. Breast tumor is the most common tumor in the patient with Klinefelter syndrome. And if they ask you most common CVS abnormality क्या है? CVS abnormality in Klinefelter syndrome. तो क्या आंसर होगा? दैट इज mitral valve prolapse. It is the most common CVS abnormality associated with Klinefelter syndrome. Now we're going to discuss about the Turner syndrome. Second is the Turner syndrome. So Turner syndrome का karyotype क्या है? It is 45 plus XO. Okay. Most common cause of Turner syndrome क्या होगा? That is non-disjunctional during meiosis. And most common cause of female hypogonadism is what? That is the Turner syndrome. It is a most common cause of female hypogonadism. अगर किसी फीमेल में फीमेल करेक्टर्स कम होंगे तो व्हाट यू गोना सी?
यहाँ पे जनरली इन फीमेल्स में मेल करेक्टर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल. तो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स हेयर? फर्स्ट, दीज फीमेल हैव शॉर्ट स्टेचर. सेकेंड, यहाँ पे ब्रेस्ट एट्रोफी हो जाती है. देयर इज अ ब्रेस्ट एट्रोफी. Second, third, you gonna see what? In these females, webbed neck is present. Fourth, here, the ovaries are streak ovaries. Now, fifth clinical feature is you're gonna see multiple nevis. Nevis are present on the lower limb and on the bodies. Okay, so these are the clinical features you're gonna see in case of the Turner syndrome. And the last syndrome that we're gonna discuss here in case of sex chromosome disorder, that is Noonan syndrome. Noonan syndrome. Now, what is this Noonan syndrome? It is the question asked in 2019 FMG. So here the karyotype is what? That is normal. Now, what is the clinical feature of Noonan syndrome? It is same as Turner syndrome. Okay. जर्नली नूनान में पैथोलॉजी क्या है? क्रोमोसोम 12 का म्यूटेशन हो जाता है. यहाँ पे क्रोमोसोम 12 गॉट म्यूटेटेड. So these 3 points you have to remember about the Noonan syndrome.